Hello students. So in your previous lecture, we have discussed with design period, per capita demand and factors affecting per capita demand. Today, let us discuss with one of the very important topics of this chapter, that is population forecasting. Okay, now let me read this. So population forecasting is very important factor for design purposes. Okay, now let me understand what is this population forecasting. Now we all know population. What is population? So group of people living in a place, that is population. Forecast. Now when I say forecast, we are predicting here. ओके सो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितना पॉपुलेशन होने वाला है. ओके नाउ व्हाई वी आर प्रेडिक्टिंग हियर. ओके लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट. सी इन केस present population if I take, let me go with the Belgaum city only, just for an example. For example, अभी बेलगाम सिटी का अगर पॉपुलेशन में देखूँ 20 लाख है समझो. ओके सो पूरे बेलगाम सिटी में 20 लाख लोग रह रहे हैं. क्लियर. नाउ फॉर दिस 20 लाख पीपल आई नीड टू सप्लाई वाटर. So I need to calculate through per capita demand. So per capita demand means per head demand. I will calculate कि कितना एक आदमी को कितना पानी चाहिए. क्लियर. एंड आई विल फाइंड आउट कि एक आदमी को इतना पानी चाहिए, मतलब टोटल पॉपुलेशन को मुझे इतना पानी सप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर. सो दिस इज डन फॉर नाउ प्रेजेंट दिस ईयर. क्लियर. बट व्हेन आई एम डिजाइनिंग अ वाटर सप्लाई सिस्टम, मतलब जब आप वाटर सप्लाई सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, जो भी अंडरग्राउंड में हम लोग वाटर पाइपलाइन वाटर सप्लाई सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो आप 20 to 30 ईयर्स के लिए इंस्टॉल करते हो. Clear. When I see, we have studied in your design period, isn't it? So in design period, what is design period? So when we are designing or when we are planning any water supply system, we design it for 20 to 30 years. Okay. Now when I do 20 to 30 years, why is that so? Because today when I've installed all the water supply system below the ground with all your pumps, pipelines, valves, okay, 20-30 years तक वो मुझे ऑपरेट होना चाहिए. नहीं तो आप हर साल पे उसको निकाल के रिप्लेस करना, नया बिठाना नहीं कर सकते. इजंट इट? सो इन दैट केस 20 to 30 ईयर्स के लिए हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर वर्क्स प्लान करते हैं. बट 20-30 ईयर्स में पॉपुलेशन सेम रहेगा नहीं. क्लियर. अभी प्रेजेंट 2020 इफ आई टेक, ओके 2020 में आई से इट इज 20 lakhs. When I'm designing a water supply system for 20 years or for 30 years, मतलब आप 2040 के लिए 2050 तक के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम आप बना रहे हो. क्लियर. तो 2040 में और 2050 तक मेरा जो पॉपुलेशन है बेलगाम सिटी का, क्या वो 20 lakhs ही रहेगा? नहीं. इट कैन चेंज, इजंट इट? इट विल इंक्रीज और मे बी इट विल डिक्रीज ऑल्सो. Probably it will not decrease. Why? Because in case of extreme conditions, जैसे कुछ earthquake आ गया या कुछ famine kind conditions, then only it will decrease. Otherwise the population goes on increasing year by year. So how much it is increasing, that we need to find out here. Okay. When I can find out the population, then I can find out the water requirement and I can go with the design of my equipments and my water supply system. Clear. For that purpose, this population forecasting is very important. Okay, let me read it once again. See, for design of any water works, future population and its demand is required. Very important. See, अभी मैंने 2020 में मुझे एक टास्क मिला है वाटर सप्लाई सिस्टम इंस्टॉल करने का, तो मैंने 2020 में आपको वाटर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन किया है. लेकिन मुझे जो वाटर सप्लाई सिस्टम प्लान करना है वो 2050 तक के लिए, 30 ईयर्स के लिए मुझे प्लान करना है. तो मुझे 2050 तक कितना पॉपुलेशन रहेगा वो मुझे प्रेडिक्ट करना है, वो मुझे फोरकास्ट करना है, फाइंड आउट करना है. और 2050 तक पॉपुलेशन कितना रहेगा, उसमें कितना पानी रिक्वायरमेंट चाहिए. ओके सो पर पर्सन कितना पानी रिक्वायरमेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल 2050 तक, ओके इन नेक्स्ट 30 ईयर्स मे बी द पॉपुलेशन माइट बी 80 lakhs. ओके अभी 20 lakhs है, मे बी द पॉपुलेशन माइट बी 80 lakhs in another 30 years. So for those 80 lakh people, how much water is required, that I will find, and accordingly I will design my water supply system here. Clear. So this thing is very important when you are designing any water supply system, any water works. Okay, then your population forecasting is very important. Okay, clear. Now you can see here, with the increase in population there will be increase in water demand.
क्लियर. अ सिंपल एग्जाम्पल अगेन इफ आई गिव यू, मेरे घर में 4 लोग हैं. ओके, 4 लोग, व्हेन आई से पर पर्सन वाटर रिक्वायरमेंट इज 10 लीटर्स. Okay, so four people water requirement is 40 liters. Clear. Suddenly some guest come in my house. Okay, so another 2 people have come in my house now. Okay, now those 2 people also require water. Okay, maybe those 2 people also on an average if I tell वो 2 लोगों को भी 10-10 लीटर चाहिए. क्लियर. तो एकदम से कितना पानी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया, 60 लीटर्स हो गया अभी. Clear. So that ways for present I know the population, but when I'm designing the water supply system, I design it for 20 to 30 years, so I should know the population for another 20 to 30 years. Then only I can find out the water requirement and I can design my water supply system. But how will I find the population for 20 to 30 years, isn't it? I will go it with population forecasting here. Clear. So we forecast it, we predict the population. I do not say this forecasting या ये prediction जो आप कर रहे हो वो सही है, but on an average I will get an idea how much is the population and I can predict and go with my design. Clear. Next, if I see what are the factors affecting the population growth here. Okay, so which are the main reasons based on which the population can increase or decrease, isn't it? Let us see one by one. The first one is economic factors. Okay, economic factors, the construction and working of new industries and factories affect the population growth of a city. Okay, when I come with economic, it is your money matters here. So any people, you must have seen that village side people do not have more of work, more of jobs. ओके, तो पैसे कमाने के लिए वो लोग बड़े शहरों में जाके काम करते हैं, isn't it? अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम मिलने दो या कंपनी में काम मिलने दो, कहीं पे भी काम मिलने दो, वो लोग दूसरे शहर में जाके रहते हैं. क्लियर. तो वो दूसरे शहर में जब जाके रहते हैं तो वहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, isn't it? और विलेज में जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ का पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया. सो दैट मीन्स वन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज थ्रू इकोनॉमिक फैक्टर्स. क्लियर. Next, if you take social factors, okay, or social facilities, so due to schools, hospitals, parks, okay, or other facilities, the population can increase or decrease. Okay, now here also we have seen schools and all will not be much present in your village sites. Okay, but when you go in your cities, in your towns, okay, so there you have very good schools. So what parents do, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वो सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं. क्लियर. उनके स्कूल्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे विलेजेस का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है और सिटीज़ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है. क्लियर. तो जब वो वहाँ पे रह रहे सिटी में, उनको पानी चाहिए पीने के लिए, वाटर डिमांड विल इंक्रीज. सो दिस कैन बी वन फैक्टर फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन. क्लियर. नेक्स्ट, इफ यू सी डेवलपमेंट programs. Okay, so development programs such as bridges, dams, other projects can also affect with the population growth. Okay, in this case due to construction. So we must have seen that in around the city where all the construction will be going on. So there which all laborers will be there. प्रोबेबली इन दोज लेबर्स सारे बेलगम के लेबर्स नहीं रहते हैं जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे. कोई राजस्थान से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, isn't it? Different states they must have come in search of money, in search of I can say food, in search of their living, isn't it? तो ये अगर कुछ कंस्ट्रक्शन जैसे कि डैम्स, ब्रिजेस या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उस केस में भी अलग अलग जगह से लोग ट्रैवल करके काम के लिए आते हैं एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी और दैट place increases here. Clear. Next, if you take communication links. Okay, now communication links here is when a small city is having a communication with the big city. Okay, there also the people travel from one place to other place and the population can be more or less here. Okay, you can see this, the communication and connection of the city, okay, with the big cities affects the population growth here. Clear. Next, if you see tourism. Okay, so religious temples and historical buildings also increase the population growth. Very true, isn't it? Now we have some historical places like your Kedarnath is there, Amarnath is there, isn't it? People go, your Shirdi Sai Baba, clear. So these are your historical religious places. So there people go, they live for some days, isn't it? When they go there, they live for some days, the population of that city increases, isn't it? So your tourism also is one of the factor for increase in population here. Clear. Next, if you see unforeseen factors, unforeseen मतलब एकदम से
अचानक से कोई घटना हो गया वैसे, ओके तो अचानक से कोई घटना में क्या होता है, लाइक एक अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, योर फ्लड्स, क्लियर, फैमिन, नो दीज काइंड ऑफ आई कैन से रीजंस बता के नहीं आते, इजंट इट, एकदम से हो जाता है, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स आ गया, क्लियर. तो इन सच कंडीशंस ऑल्सो द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज. प्रोबेबली इट डिक्रीजेज नो व्हेन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, मेनी पीपल डाई, क्लियर, so there the population decreases of that city. Sometimes flood is there, so floods recently somewhere in Bihar and all, like you can say floods had taken place, so people were traveling from Bihar to other states, isn't it? So that case Bihar population will decrease, and where they travel there the population will increase, clear. So such things happen also, which is one of the factors for increase or decrease of the population growth here, clear. Very important question that is. Next we will come to a very important question, that is methods of population forecasting. Now what is this methods of population forecasting? So I have told you what is population forecasting now. So हम लोग यहाँ पे population को predict कर रहे हैं, क्लियर, बेस्ड ऑन व्हाट, माई प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो मुझे प्रेजेंट पॉपुलेशन पता है, क्लियर. प्रेजेंट पॉपुलेशन मुझे कहाँ से मिल जाएगा, मेरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो सेंसस डिपार्टमेंट है, ओके, दे विल हैव द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो विद द प्रेजेंट पॉपुलेशन आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट, आई एम गोइंग टू I can say forecast the future population. Like I know 2020 what is the population, and I am going to predict कि 2030 में population कितना रहेगा, 2040 में population कितना रहेगा, या फिर maybe 2035 में population कितना रहेगा. I can predict it here, okay. But वो predict कैसे करोगे आप, वो predict how you will do, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे methods है. So we have total of 6 methods here. So through with these 6 methods I can find out how the population can be forecasted, how can population can be found out for future years, okay. Let us see first which are these methods. All these 6 methods we will discuss one by one in detail, okay. First one is arithmetical increase method, which we also call it as AIM method. Second, geometrical increase method as GIM method. Then incremental increase method as IIM method. Decrease rate of growth method, graphical method, and master plan method, which is also known as zoning method here, clear. So among all these 6 methods, these first 3 methods are very important, okay. Why it is very important? Because on these 3 methods we are solving problems also, okay. So when I tell or explain these methods, see that you understand it properly, okay. And after we discuss these methods, we will go with the problems on these 3 methods, okay. So this is the only chapter which has problems, okay, and each problem carries 10 marks, okay, and they are little lengthy problems. So see that when we are discussing with the problems also, you pay attention, okay, and understand it properly, clear. So we will stop it here. In next class we will discuss with these methods one by one, and then we will go with the problems, okay. Thank you.